अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं नामूस रिसाल जे हवाले सां। इन ॻाल्हि खां को बि मुसलमान इनकार नथो करे सघे, पर हिन वक़्तु जेका मुल्क में सूरत हाल या कुझु ॾींहं अॻु में जेका सूरत हाल थी, हंगामा थिया, फ़साद थिया, मुल्क खे ॼण त आवाम खे यरग़माल बणायो वियो। इहो यकीन अफ़सोसनाक ॻाल्हि हुई। पार्लियामेंट में इन हवाले सां जेका अॼु जी जेका सूरत हाल रही, क़ौमी असेंबली जो फौरी तौर इजलास तलब कयो वियो ऐं उन में फ्रांसीसी सफ़ीर खे मुल्क बदर करण जे हवाले सां क़रारदाद पेश कई वई, जंहिंजी हिमायत JUI या PDM जे प्लेटफॉर्म ताईं नून लीग पारां कई वई, पर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां इन ते तमामु घणो सख़्तु स्टैंड वरितो वियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत जे मुख़्तलिफ़ जेके फ़ैसिला मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हुकूमत कया, मुआहिदे जे हवाले सां, एग्रीमेंट जे हवाले सां, उनखे पार्लियामेंट में न आणण जे हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो त हाणे वरी हुकूमत इन मामले ते हिकिड़ो शेल्टर चाहे थी, पार्लियामेंट जो शेल्टर, जेको हुकूमत खे न ॾिनो वेंदो। पीपल्स पार्टी पारां जेको हंगामी तौर अॼु क़ौमी असेंबली जो इजलास घुरायो वियो, हुनजो बाइकाट कयो वियो। इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेका सूरत हाल रही उहा अफ़सोसनाक रही। केतिरनि माण्हुनि खे पंहिंजे कानून लागू कंदड़ अहलकारनि खे अगवा कयो वियो, केतिरा ई जेके से आवाम खे नुक़सानु पहुतो, मिल्कियतनि खे नुक़सानु पहुतो। हुकूमत वज़ीर आज़म जेका पॉलिसी ॾियणु घुरिजे हा, वज़ीर आज़म जेका पॉलिसी हुई, पहिरीं न तंज़ीम ते पाबंदी जो फ़ैसिलो, न ॻाल्हाइण जो फ़ैसिलो, पोइ आहिस्ता आहिस्ता हिन जे सभिनी नुक़्तनि खे मञण जो फ़ैसिलो, इन ते अपोज़िशन पारां या पीपल्स पार्टी पारां तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। अॼोके प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं त हुकूमत जो जेको यू टर्न आहे या हुकूमत जी जेका पॉलिसी आहे, उहो मुल्क खे कहिड़े तरफ़ वठी वेंदी, कहिड़ो नुक़सानु थींदो, इन जा असर कहिड़ा पवंदा, छा हुकूमत इन मामले खे मिस हैंडल करे वई या हुकूमत इन मामले खे उन तरह न संभाले सघी जीअं संभालणु घुरिजे हा। पार्लियामेंट जे फोरम ते इन मामले खे आणणु घुरिजे, एग्रीमेंट खे उन ई वक़्तु जॾहिं तरह जा मामला तय थिया हुआ। इन हवाले सां हिन वक़्तु असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ जॉइन कयो आहे सीनियर तजिया निगार नसीर मेमन साहब। नसीर साहब, वरी महिरबानी तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ जॉइन कयो। नसीर साहब, छा था ॾिसो हीउ जेको नामूस रिसालत वारो मामिलो, हुकूमत पारां जेके पहिरीं ॻाल्हियूं कयूं वयूं त भई फ्रांसीसी सफ़ीर जे हवाले सां या उन मज़हबी जमात ते जेका पाबंदी मड़ी वई, उन खां पोइ हुकूमत जो यू टर्न हिन वक़्तु क़ौमी असेंबली जे इजलास में जेका गॾियल क़रारदाद हुकूमत जे तरफ़ां पेश कई वेंदी फ्रांसीसी सफ़ीर खे मुल्क बदर करण जे हवाले सां, पहिरीं हिकिड़ी पॉलिसी ॾिनी वञे थी, उन खां पोइ पॉलिसी बयान खे तब्दील कयो वञे थो, छा चवंदो? हुकूमत बिल्कुलु डायरेक्शन लेस आहे, हुनखे का ख़बर कान्हे त करिणो छा आहे। ख़ान साहब खे बिल्कुलु पतो नथो पए, न मईशत में, न सियासत में, न पंहिंजा जेके हुनजा हमदर्द आहिनि, जहांगीर तरीन जो मामिलो हुजे या ॿिया जेतिरा मामला आहिनि, हुन सभिनी में बार बार साबित थियो आहे त हुन वटि सलाहियत जी शदीद खोट आहे, जेका कि लीडरशिप जी सलाहियत हुजणु घुरिजे। लीडरशिप जी अहम सलाहियत आहे डिसीशन मेकिंग। ॿियो हाणे लीडर खे पाण थोरी पुलिस वठी अॻियां वञी बीहणो हूंदो आहे अहिड़नि मामलनि में, सही फ़ैसिला कनि, वक़्ताइता फ़ैसिला कनि, उहे थियनि न पिया। हीउ सॼो मामिलो मिसहैंडल थियो, उनखे साद रिज़ी खे गिरफ़्तार कयनि, उन तां सॼो ई बाइताल पतो 23 मुल्क मफ़लूज हो, करोड़े रुपयनि जो नुक़सानु जी या बेगुनाह मासूम माण्हू उहे मारिजी विया, सवें माण्हू ज़ख़्मी आहिनि अस्पतालनि में, ॿिया 100,000 अस्पतालनि में जेके रसद जेका उन वक़्तु मुअत्तिल ही रस्ता मुअत्तिल आहे, अस्पतालनि में न पुॼी सघिया, उन्हनि मां घणियूं जानियूं वियूं हूंदियूं, उन्हनि जो बि कोन्हे को। वींदे कोविड जे जेके आहिनि बीमार, उन्हनि खे ऑक्सीजन मुहैया थी वई, ऑक्सीजन न पे पहुती, त इहो सभु कुझु करण खां पोइ नेट वञी उते कंध झुकाए वेठा, हुननि जा सभु मुतालबा मञनि, सभु माण्हू आज़ादु कयनि, केस ख़तमु कयनि, त पोइ इन मां तव्हां अंदाज़ो करियो वरी करारदाद बंदि कुझु करो हाणे पहिरें ॾींहुं आणे छॾियो आहे न, पोइ अहिड़ी ब्रेक करण जी, सॼे मुल्क खे तबाह करण जी, मफ़लूज करण जी, ऐं हिकिड़ियुनि फोर्सिस खे तव्हां नए सर हथी ॾेई सोसाइटी में हुनजो केॾो कदु वधायो, केतिरो हाणे उहे पावरफुल थिया, इहो अॻियां अञा तव्हां ॾिसिजो वेठा त हिन जा सियासी असर कहिड़ा था थियनि। हिकिड़ो इंतिहाई माना मां सम्झां थो त घटि मयार वारी क़यादत जेका पाकिस्तान खे मिली आहे, उन जा ही सभु मंज़रनामा आहिनि ऐं हिकिड़ी अफ़सोसनाक सूरत आहे। नसीर साहब, हुकूमत आवाम खे त प्रोटेक्ट न करे सघी न सॼे मामले में, पाण डिफेंसिव पोज़ीशन में अची वई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी जो जेको इन ते मौक़िफ़ आहे, हिकिड़ी चिटी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां लकीर कढी वई आहे त भई क़ौमी असेंबली जे इजलास में जेको फौरी तौर अॼु घुरायो वियो, उन में शिरकत न करण जो जेको फ़ैसिलो हो, उनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? छा इन तरह जे डिसीशन वठण जो पावर हुअणु घुरिजे या पीपल्स पार्टी जे इन तरह जे फ़ैसिले खे कीअं था ॾिसो त भई अॻु में इहो मामिलो पार्लियामेंट में छो न आंदो वियो? जॾहिं मुआइदो थियो नवंबर जो, तॾहिं हिननि कोन ॻाल्हायो, हिननि पार्लियामेंट खे ॿुधायो कोन। पार्लियामेंट में मुआइदो थियण खां पोइ बि मुआइदो न खणी आया।
गिरफ़्तार करण जो फ़ैसिलो थियो या जेतिरियूं बि शयूं थियूं उन्हनि में का बि शइ पार्लियामेंट में न आई। कल्ह क़ौम खे ख़िताब कई, पार्लियामेंट में न कयो वज़ीर आज़म। तो जॾहिं इहे सभु शयूं पंहिंजूं करणियूं आहिनि त पोइ पार्लियामेंट जो कुल्हो छो इस्तेमालु थिए हिकिड़ी अहिड़ी शइ जे लाइ जेका तमामु घणी तकरारी साबित थींदी अॻियां हली। तव्हां ॾिसजो हिकिड़े वॾे मुल्क जे सफ़ीर खे कढण जे लाइ तव्हां करारदाद आणींदो, उन सां छा असर पवंदा डिप्लोमेटिक लेवल ते कि आम को माण्हू जो मुतालबो कोन्हे, आम कंहिं सियासी जमात जो मुतालबो कोन्हे, ही कंहिं सहाफ़ती कंहिं प्रोग्राम जे दौरान जीअं असां करियूं पिया उन में थियल ॻाल्हि कान्हे। ही मुल्क जी सभ खां वॾे नुमाइंदा ऐवान चूंडियल ऐवान में करारदाद आणण आहे, जंहिंजो मतिलबु आहे ऐं उहा हुकूमत जे मर्ज़ीअ सां रज़ामंदीअ सां ख़्वाहिश सां अचे पई। त उहो आलमी सतह ते डिप्लोमेटिक सतह ते जेको मैसेज वेंदो उहो आप सम्झी सघो था त उनजा असर छा हूंदा, छा मुल्क जे बारे में तासिर पैदा थींदो, कीअं मुल्क सां ॿिया मुल्क डील कंदा, कीअं तव्हां सां कारोबार कंदा, कीअं तव्हां सां सिफ़ारती सियासी मामला हलाईंदा। इहे सभु असर थियणा आहिनि जंहिंजो हिननि खे को अंदाज़ो कोन्हे। नसीर साहब इहो हिकिड़ो ई तरीक़ो हो, हुकूमत इहो चवे थी त भई तहरीक लबैक जो या हुकूमत जो मौक़िफ़ हिकिड़ो ई आहे पर तरीक़ेकार अलॻि आहे, त छो उन ते उनखे पंहिंजे तरीक़ेकार ते हुकूमत क़ाइल न करे सघी, एॾो बोल्ड स्टेप वरिता हुकूमत पारां पर उन्हनि खे मैनेज न करे सघी, पार्लियामेंट में हिन मामले खे आणणु घुरिजे हा, पार्लियामेंटी पार्टीज़ खे एतमाद में वठणु घुरिजे हा, छा किरदारु हुअणु घुरिजे हाणे सियासी पार्टियुनि जो, जॾहिं त PDM जे प्लेटफॉर्म तां अॼु जेको क़ौमी असेंबली में करारदाद पेश कई वई हुनजी हिमायत कई वई आहे, JUF पारां हिमायत कई वई, नून लीग पारां हिमायत कई वई, सिवाइ पीपल्स पार्टी जे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहे जिन बि हुनजी हिमायत कई आहे उहो हिकिड़ो वॾो प्रेशर बि आहे, छो त हुनजे नतीजे में हाणे जेको वोट न कंदो हुन लाइ इहो तासिर आम कयो वेंदो त ॾिसो ही त नामूस रिसालत में शायदि यकीन नथा रखनि, इहो तासिर पैदा कयो वेंदो जॾहिं त उसूली तौर ते अहिड़े क़िस्म जूं शयूं असेंबलीअ जे करारदादनि वसीले न निबेरजनि थियूं न आणणु घुरिजनि। मिसाल तौर इन करारदाद जो जी ऑफिशियल हैसियत का बि न आहे। असेंबलीअ में करारदाद तव्हां केॾी बि आणियो, अलाए केतिरियूं करारदादूं ईंदियूं आहिनि असेंबली में, उनजी ऑफिशियल हैसियत का बि न हूंदी आहे, उन ते एक्शन को बि न थियणो हूंदो आहे। ॿियो बसि हिकिड़ो रिकॉर्ड लाइ हूंदो आहे त असेंबली हीअं चयो, मेंबर उथंदा तकरीरूं कंदा, पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कंदा ऐं जेको बि हुनजो मौक़िफ़ आहे उहो ॿुधाईंदा। पर जहिड़ी तरह पार्लियामेंट खे बाक़ी सॼे मामले में आया त असां सभु शुरू खां पार्लियामेंट खे एतमाद में वठे हा, सियासी पार्टियुनि सां ॻाल्हाए हा, उनजी क़यादतुनि खे एतमाद में वठे हा, उन्हनि खे गॾु खणी हले हा, पोइ फ़ैसिला गॾियल थियनि हा, ऐं पोइ जेके बि थियनि हा घटि में घटि क़यादतूं ऐं पार्टियूं हिकु पेज ते हुजनि हा न, ओनरशिप हुजे हा उन फ़ैसिले जी। हींअर जेकर पीपल्स पार्टी हुन में नथी वञे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उहो इन लिहाज़ सां हुनजो एतिराज़ इन ते कोन्हे त तव्हांखे कंहिंखे को एतिराज़ हूंदो नामूस रिसालत ते, एतिराज़ इन ते हूंदो त हुकूमत कहिड़ी तरह ॿियनि जा खुदा इस्तेमालु थी करे ग़लति फ़ैसिला करे थी ऐं पोइ जॾहिं शयूं हथ मां निकिरी थियूं वञनि त पोइ वरी अचे थी त हाणे पार्लियामेंट असांखे रेस्क्यू कराए। तो बुनियादी इख़्तिलाफ़ इन ते आहे। नसीर साहब एक्सट्रीमिज़म तमामु घणो असांजे मुल्क में वधी वियो आहे, रियासत जी हवाले सां रिट असांखे नज़र कोन थी अचे, कहिड़ा इन जा नुक़सान थींदा, असांजी ख़ारजा पॉलिसी डिस्टर्ब थींदी, बैन अक़वामी तालुकात ते इन जो असर पवंदो, सॼे यूरोप सां ख़ुदि हुकूमत जा वज़ीर, ख़ुदि गवर्नर सिंध, ख़ुदि वज़ीर आज़म, ख़ुदि वफ़ाक़ी वज़ीर इन ॻाल्हि खे एडमिट कनि था त इन सां असांजा जेके तालुकात आहिनि, रिलेशन्स आहिनि, उहे सॼे यूरोप सां ख़राबु थींदा, असां कटिजी वेंदासीं। उन बावजूदि छा असांजो मुल्क इन पोज़ीशन में आहे त इहे नुक़सान बर्दाश्त करे सघे? पहिरीं ॻाल्हि त इहो एक्टिविज़म कोन्हे, एक्टिविज़म पंहिंजे विस्म में हिकिड़ी ॿी मुख़्तलिफ़ शइ आहे, हुन ते अलॻि सां ॻाल्हाए सघे। हीउ जेको बि तरीक़ेकार आहे उहो आहे त बाक़ाइदे के ग्रोह एतिरा पावरफुल थी वञनि था सोसाइटी में जो उन्हनि जे ताक़त अॻियां रियासत जी ताक़त कमज़ोर थी वञे, रियासत हुननि जा ॾोॾा खोड़े थी। बाक़ी दुनिया खे त मैसेज या जेको बि ईंदो या असां सां तालुकात कड़ा रहंदा, असांखे दुनिया कीअं ॾिसंदी, फ्रांस कीअं ॾिसंदो, यूरोपीय यूनियन, उहा त थी अलॻि ॻाल्हि। पर सॼी दुनिया में जेको ॿियो तासिर ईंदो हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क आहे, हिकिड़ो अहिड़ी रियासत आहे जेका ग्रोहनि जे कब्ज़े हेठि आहे। तो जॾहिं तव्हां सां दुनिया फ़ैसिला करे, तव्हां सां तालुकात क़ाइमु करे, तव्हां सां मुआहिदा करे, तव्हांखे कर्ज़ ॾे या तव्हां सां जेके बि रस्ता थिए, उनखे वाज़े तौर जो पैगाम हूंदो त हिन रियासत जे अंदरि हुकूमतूं पावरलेस आहे, तुंहिंजी का हैसियत न आहे, रियासत बाहिसियत ऐं मजबूती, मुख़्तलिफ़ ग्रोह जॾहिं थिया उनखे उथी पंहिंजे पेरनि ते पंहिंजे गोॾनि ते झुकाए सघनि था। इहो मैसेज सभिनी खां ख़तरनाक आहे, इहो मैसेज अॻे ई मौजूदु आहे, इहो तासिर अॻे ई मौजूदु आहे ऐं हिन फ़ैसिले खां पोइ इहो तासिर बहितर महसूसु थींदो, हुनखे हाथी मिलंदी। वरी महिरबानी नसीर मेमण साहब त पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर तर्ज़निगार नसीर मेमण असां सां गॾु, हुनजो चवणो हो त जेको दुनिया जे अॻियां असांजो इम्प्रेशन आहे, जेके हिकिड़े
साख आहे उहा त मुतासिर थींदी, पर इहो मैसेज पिणु वेंदो त भई हिन मुल्क सां वापार कीअं कजे, हिन मुल्क सां ॾेती लेती कीअं कजे, हिन मुल्क सां मुआहिदा कीअं कजनि, जेको हिकिड़ी मज़हबी तंज़ीम जे अॻियां इन तरह मजबूर थी वञे थो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, वक़्तु ऐं मुख़्तसिर वक़फ़े जो वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं हुकूमत पारां जेको क़ौमी असेंबली जो इजलास घुरायो वियो आहे, फ्रांसीसी सफ़ीर जी नेकाली जे हवाले सां क़रारदाद पेश कई वेंदी, जंहिंजी पीपल्स पार्टी खां सवाइ तक़रीबन सभिनी पार्लियामेंटी जेके जमातूं आहिनि उन्हनि पारां हिमायत कई वई आहे। नून लीग, JUI या PDM जे प्लेटफॉर्म तां हुकूमत पारां जेका क़रारदाद अॼु पेश कई वई उनजी हिमायत कई वई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इन हवाले सां चवणु आहे त हुकूमत जेके बि मामला पैदा कया उन्हनि खे हैंडल न करे सघी। अॻु में जेको मुआहिदो हो उहो कीअं कयो वियो, उनखे पार्लियामेंट जे फोरम ते छो न आंदो वियो, ऐं हाणे हुकूमत जेकॾहिं पार्लियामेंट जे पोयां लिकड़ चाहे थी त हुकूमत खे इहो स्पेस न ॾिनो वेंदो। इन ई मामले ते हिन वक़्तु ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे मेंबर्स इन असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब वेलकम कहती हूँ, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फिरदौस साहब क्या कहेंगे हुकूमत के हवाले से? हुकूमत कुछ दिनों तक, एक हफ्ता पहले की अगर हम बात करें, मुल्क में जो सूरत हाल रही, जो हालात कशीदा रहे, जो नुकसानात हुए, जिन इमलाक को नुकसान पहुंचा, कीमती जानों का ज़ियान हुआ, अब जो सूरत हाल है हुकूमत खुद कौमी असेंबली में एक करारदाद हुकूमत ने पेश की है जिसमें फ्रांसीसी सफीर की नेकाली के हवाले से जो है वो मामला रखा गया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हम सब आशिकाने रसूल हैं, बिल्कुल, हमारी जान कुर्बान नामूस रिसालत के ऊपर जो बयानी आप दे रही हैं मैं उससे थोड़ा सा फर्क बयानिया दे देता हूँ जी। कि पिछले 3 माह से हुकूमत बाकायदा एक बातचीत में थी जिसका हमारे वज़रा ने इजहार असेंबली के फ्लोर पे किया और उन्हें ये भी बताया कि हम इस हद तक गए थे कि हम ये करारदाद असेंबली में लाने को तैयार हैं और जो पार्लियामान का फैसला होगा वो आप लोग कबूल कीजिए। उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर ने यह फैसला किया कि वो इस्लामाबाद के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए अपनी कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को कि वो इस्लामाबाद जाए और ये भी खबरें आई कि वो उनके इरादे कुछ नेक नहीं हैं फ्रांस की एम्बेसी के हवाले से और इनक्लेव के, उसकी वजह से इकदाम लेने पड़े जो कि लिए हुकूमत ने, जिससे कि वो हम नहीं चाहते थे कि इस्लामाबाद में जाके कोई जंग व जदल का मैदान बढ़े, पूरी इंटरनेशनल इश्यूज बने, तो हमने वो इकदाम किए। जब हमने उनको अरेस्ट कर लिया उसका रिएक्शन आया, हमने सड़कों को भी क्लियर कराया, एक आध जगह जो था वो धंधा मार दिया। फिर हमारे बाकी उलमा वो इस मौजू पे आ गए और उन्होंने बाकायदा एक हड़ताल का ऐलान किया। उसके बाद हमने उन उलमा से भी ताल्लुक़ किया, उन्होंने कहा जी हम नहीं चाहते कि इस मामले पे पाकिस्तान की गलियों में खून दें। हमने कहा सद एहतराम, लेकिन हम तो नहीं बाहर है, हमने तो कहा है कि आओ नहीं, हमने तो असेंबली में। उन्होंने कहा आप हमें भी शामिल कीजिए उनके साथ बातचीत में, मुज़ाकरात में, मनवाने के साथ। वो बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, असेंबली में वो आ रही है। जहाँ तक ताल्लुक है कि जो जो अशखास गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े गए उनके ऊपर कानून निश्चित करेगी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि हम किस इशू को, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम मिसगाइड हों, चाहे वो तहरीक लब्बैक की वजह से हो या किसी से, कि ये हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम किए हैं जिससे कोई ये कह सके कि नामूस रिसालत हमें नहीं आती। हमारे वजीर आज़म ने 12 हर फोरम के ऊपर इस बात को उठाया है जो कि माजी में किसी ने नहीं उठाया। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली काम जो है, नामूस तो कोई क्वेश्चन में है ही नहीं, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई किसी को सवाल आता ही नहीं है कि किसी के ईमान पे शक किया जाए। अलबत्ता इशू को हैंडल करने के जो तरीक़ेकार है उसमें फ़र्क है। हम समझते हैं कि मुसलमानों को एक मजबूत ताकत बन जाना चाहिए और जब वो एक मजबूत ताकत बनेंगे तो वो ऐसी ताकतों के साथ इक्वल फुटिंग में बात कर सकेंगे। अभी जो है वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तो हम ज़्यादातर मुसलमान ममालिक का हाल ये है कि हमारा हाथ नीचे वाला हाथ। हमें अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना है, हमने अपने आप को मजबूत करना है, तब ही हम अपनी बातें मनवा सकेंगे। और जैसे वजीर आज़म साहब ने कहा कि हमने अगर कलेक्टिवली तमाम इस्लामी ममालिक
اس موضوع کو اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہم ٹریڈ بائیکاٹ کریں گے تو شاید کچھ اثر ہو. ہم اپنی ہی گلی سڑکوں میں گاڑیاں جلاتے رہیں, ایک دوسرے کو مارتے رہیں, اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلہ اجاگر ضرور ہوگا لیکن ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہوں گے, ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گے. فردوس صاحب, آپ نے کہا کہ عوام کو مس گائیڈ, لیکن عوام تو مس گائیڈ تو ہوئی, عوام تو کنفیوز ہے. سیاسی جماعتیں بھی تنقید کر رہی ہیں, خود پیپلز پارٹی نے تنقید کی. عوام سوچ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کیا پہلے کوئی پالیسی نہیں تھی, اب کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. حکومت اپنی پالیسی, اپنے بیانات میں خود جو ہے کنفیوژن کا شکار نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ دیکھیں, نہیں, مجھے تو بالکل نہیں آ رہا, جس سے کہ حکومت کا سب سے بڑا فرض جو ہے وہ اپنی ایک فارن پالیسی کے لحاظ سے فارن پالیسی سے ڈیل کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فرانس کو کنڈمنیشن ہو, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایمبیسڈر, یہ پوائنٹ آف ویو پرائم منسٹر نے کہا, ہم فلور آف دا ہاؤس پہ لے آئے کہ جس کو جو پوائنٹ کہنا ہے وہ کہہ دے. اس سے کہ جب نہیں لاتے تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں نہیں لاتے, اور جب پارلیمنٹ میں لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں ہم سے پہلے کنسلٹ کیوں نہیں کیا گیا. ہمیں یہ بات آج نہیں دکھائی گئی, یہ اس سے پہلے بھی کی پی ڈی ایم نے. کس موضوع پہ کی تھی؟ سینٹ کے الیکشن کے بل کے اوپر. پہلے کہتے رہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ووٹنگ جو ہے وہ فلور کراسنگ ہو, یہ ہو, اور جب ہم نے کہا کہ یہ بل ہے جس میں ایک لفظ کا تبدیلی, تو انہیں کہا کہ یہ ہمیں اس سے پہلے کنسلٹ نہیں کیا اس لیے نہیں کرتے. اور یہ تو پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے, یہ آپس میں سپلٹ ہو چکے ہیں. اب یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے, ہر طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے وہ چوراہے میں آ کے پھوٹ چکا ہے. تو ان کے بیانات کو میں حیثیت نہیں دیتا, اور خاص طور پر بلا وجہ بھٹو کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. وہ تو ایک پرچی کے چیئرمین ہے, نہ کوئی تجربہ ہے, نہ ہے. ابھی تو ان کے دودھ کے دانت بھی سیاست میں جو ہیں وہ نہیں نکلے, تو پکے دانت ہوتے تو کچھ بات بھی کرتے. زرداری صاحب کی بات ہوتی تو ہم کچھ بات دیتے. یہ ایک لائٹ ویٹ آدمی کی کیا بات کرنی ہے فردوس صاحب, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ معاملہ حکومت نے تو روڈوں پر حل کرنے کی کوشش کی, پارلیمنٹ میں تو اس کو لایا نہیں گیا. اگر لایا جاتا تو پہلے بتایا جاتا ایگریمنٹ کے حوالے سے, یا 3 مہینے جو مذاکرات جو معاملات تھے. دیکھیں, بچوں کی ضدیں, بچوں کی باتیں, ان کو اسی طریقے سے رکھا جائے. یہ جو آج ڈسکشن ہو رہا ہے, یہ کیا پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے یا سڑک پہ ہو رہا ہے؟ کیا وقت سے پہلے ہو جائے؟ بھائی وقت سے پہلے ہم نے بات طے کر دی تھی کہ ہم نے کہا ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اس ایشو کو, وہاں ڈسکس ہو. اس سے انکار کس نے کیا؟ ٹی ایل پی نے. انہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے, ہم پارلیمنٹ میں لے کے بھی آتے اور وہ تب بھی دھرنا ڈالتے اسلام آباد میں, وہ تو پھر ہم بالکل ہی کچھ نہیں حاصل کرتے. کم سے کم اس کو نیگوشیٹنگ پوائنٹ کو کر کے جب انہوں نے کنسیڈ کیا ہے تو ہم پارلیمنٹ میں لے آئے معاہدے کے تحت جو ہم نے ان کو آفر کیا تھا. تو اس میں نہ ہم نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کی, عوام کو پورا کانفیڈنس میں لیا. پارلیمنٹ میں کل بھی بیان کیا, اور کل پارلیمنٹ میں ہم نے کہا ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. دیکھیے, آپ اپنے تمام کارڈز کبھی بھی پورے نہیں شو کر سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا عقل مندی کا فیصلہ تھا کہ اس کو تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا, اور ایک بڑا اسٹرانگ میسج سپورٹرز کو دیا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ دوسری دفعہ کر رہی ہے تحریک لبیک پاکستان, یہ عوام کے املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے, لوگوں کی جانیں لے رہی ہے. یہ کسی مسلمان کو کسی انسان کی جان لینے کا حق نہیں ہے. اس سے کہ یہ کہا گیا ہے دین میں ہمارے, ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. یہ رسول اللہ کا قول ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے, یہ قرآن کی آیتوں میں ہے. تو اس کے باوجود اگر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اسلام کا نام بھی لیتے ہیں, تو ان کو مجھے معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے وہ اقدام کیا وہ گمراہ کہلائیں گے. اس سے کہ دین یہ تعلیم نہیں دیتا. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی آدمی کی ذاتی گاڑی کو جلا دیں؟ نام اس نے ناموس رسالت پہ کوئی سٹینس لیا, وہ بیچارہ تو اتنا ہی عاشق رسول ہے جتنا آپ ہیں. تو فردوس صاحب یہی تو معاملہ ہے نا. ابھی آپ نے خود کہا کہ پہلے بھی اگر یہ معاہدہ تھا تو ٹی ایل پی کی مرضی نہیں تھی کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے, اس کو بتایا جائے باقی جماعتوں کو. تو کیا یہ مسٹیک نہیں تھی؟ اور ابھی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں املاک کو نقصان یا گاڑیوں کا شیشہ توڑنا, تو ابھی بھی تو ان کا مطالبہ یہی کہ ہمارے کارکنان کو جنہوں نے ایسا کام کیا ہے ان کو آزاد کیا جائے, جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں. ان کے مطالبات تو یہی ہے نا. سبھی دیکھیے, جی, ایک یہ ہے کہ جو ان کے کارکن جنرل انریسٹ میں اریسٹ کیے گئے ان کو رہا کر دیا جائے. ایک وہ ہیں جن کو اسپیسیفکلی تصاویر موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں کہ انہی نے کسی کو نقصان کیا, اقدام قتل کیا. ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے, اس سے کہ یہ حق نہ کوئی دین دیتا ہے نہ کوئی معاشرہ دیتا ہے.
اور خود انہوں نے اس بات کو مانا ہوا ہے کہ یہ نہیں دیتا. اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس ایشو پہ کنسیڈ کیا ہے. جو ایک ایشو پہ آپ کہہ سکتی ہیں کنسیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام 4th شیڈیول سے ہٹانے پہ ایگری کیے. دیٹ از دی اونلی کنسیشن کہ جی 4th شیڈیول سے. اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک میں امن و امان کی صورت اچھی رکھنی ہے, ہم نے اپنے علماء کی عزت کرنی ہے, ایسا ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا ہے, تو ان کی یہ ہم سے درخواست کی, ہمارے ساتھ انہوں نے یہ گارنٹی لی ہے کہ ٹی ایل پی بیہیو کرے گی اور وہ سعد رضوی صاحب کو کنٹرول میں رکھیں گے اور آئندہ یہ ایسے معاملات سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. ان کی اس ایشورنس کے اوپر جو ہے وہ 4th شیڈیول سے ان کا نام نکالا گیا. فردوس صاحب مجھے ایک تو غلط سمجھے, ہم سمجھتے ہیں ہمارا حکومت میں ہونے سے اولین فرض جو ہے وہ امن و امان. فردوس صاحب یہ بڑا حساس نوعیت کا جو ہے وہ معاملہ ہے اور ایکسٹریمزم ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم نے جب خطاب کیا تھا تو وزیر اعظم نے قوم کو اعتماد میں لیا تھا تو یہ بات کہی تھی کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہمارا ملک فائنینشلی اکنامی حوالے سے اس پوزیشن میں نہیں ہے, یورپ سے ہمارے تمام تعلقات جو ہیں خراب ہو جائیں گے اور ہم اس کو جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے. گورنر سندھ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کدھر گئی؟ اب جو قرارداد پیش کی گئی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے بین الاقوامی سطح پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قرارداد ابھی پاس نہیں ہوئی ہے. جی, پاکستان تحریک انصاف کا موقف کل اس پارٹی کے چیئرمین اور وزیر اعظم نے کلیئرلی کہہ دیا ہے, وہی اسٹینس آج پارٹی کا ہوگا. ہم نے کہا ہمیں اس ایشو پہ ڈیبیٹ کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اسمبلی, ہماری پوزیشن وہی ہے جو کل تھی. ہم نے آج اپنی پوزیشن نہیں چینج کی ہے. ہماری پوزیشن یہی ہے کہ ہم کنڈیم تو ضرور کرتے ہیں فرانس کے گورنمنٹ کو اور لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا, ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے جذبات کا احساس نہیں ہے, وہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر. ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں اس بات کے, لیکن اس کنڈیمنیشن میں ہم ان کو ایمبیسڈر کو باہر نہیں نکالنا چاہتے. ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ہم تمام اسلامی ممالک سے رابطہ کر کے سب پہ ایک جوائنٹ پلیٹ فارم بنا کے ہم پھر جوائنٹلی جو ہے فرانس کی گڈس کا ٹریڈ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے کہ یہی وہ زبان ہے جو یہ فرانس سمجھے گا, اس کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں. بہت شکریہ فردوس صاحب, آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, فردوس شمیم نقوی پی ٹی آئی سے تعلق رکھندڑ ممبر سندھ اسمبلی اساں سان گڏ ان جو چوڻ ہو त असां जेको करणु चाहियूं पिया उहो इहो ई त भई गॾिजी करे इन मामले खे हल करणु घुरिजे ऐं मुसलमाननि जी तरफ़ां हिकिड़ो मज़बूत क़िस्म जो मैसेज वञे. लॻे ईअं थो त हुकूमत खे पाण ख़बर न आहे त हुकूमत खे छा करणु घुरिबो हो, हुकूमत छा करे चुकी आहे. सियासी जमातनि जे हवाले सां या पार्लियामेंट में इन मामले खे न आणण जे हवाले सां फिरदौस साहब इहा ॻाल्हि एडमिट कई त TLP जे चवण ते इन मामले खे पार्लियामेंट में न आंदो वियो ऐं हाणे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेका ॻाल्हि कई आहे त हुकूमत रोडनि रस्तनि ते इन मामले खे हल कयो, फ़साद थिया, माण्हुनि जो नुक़सानु थियो, क़ीमती जाननि जो ज़ियान थियो, ऐं हाणे हुकूमत इन मामले में जेकॾहिं पार्लियामेंट खे आणणु चाहे थी विच में त हुकूमत खे पार्लियामेंट जो सहारो वठणु न ॾिनो वेंदो. प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं. वक़्तु या मुख़्तसिर वक़फ़े जो वठूं था वक़फ़ो. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं. वक़्तु नई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे ज्वाइन कयो है सेनेटर ताज हैदर साहब. ताज साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया. ताज साहब क्या कहेंगे, कौमी असम्बली का आज हंगामी इजलास बुलाया गया, करारदाद पेश की गई फ्रांसीसी सफीर की निकाली के हवाले से, JUI नून लीग ने या PDM के प्लेटफॉर्म पे इसकी हिमायत की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा सख्त स्टैंड था इस मामले पर कि अब इस मामले को पार्लियामेंट में कैसे लाया जा रहा है. हुकूमत ने इस मामले को पहले ही रोडों रास्तों पर हल करने की कोशिश की जिसके बड़े खतरनाक और अफसोसनाक नतायज जो है हमने देखे. क्या कहेंगे आप? देखो सबीन, हमें मामले की जड़ तक जाना पड़ेगा. जी देखो, हमारा माशरा तबकाती माशरा है और गरीब अमीर का फर्क जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है. दूसरे ये कि रियासत जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही कि रोजगार फराहम करना, तालीम, सेहत, ये जो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं ये पूरी नहीं कर रही. और अगर आप देखेंगी तो ये जितनी भी मूवमेंट हैं, तालिबान की तहरीक हो, MQM हो या ये वाली हो, इसमें गरीब तबका और लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो आ रहा है. अच्छा, कोई ऐसी जानी पहचानी बड़ी लीडरशिप नहीं है
ये मूवमेंट अपनी लीडरशिप खुद निकालते हैं। यानी खादिम हुसैन रिजवी साहब क़िबला को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, सईद साहब को भी। लेकिन ये कि कुछ मसाइल हैं, उसकी वजह से अब बेइत्मीनानी है, रियासत से लोग मायूस हो चुके, रियासत उनके मत तो जरा सा भी बहाना निकले तो वो एकदम एहतजाज पे उतर आते हैं। जरा सी एक चिंगारी होती है जो आग लगा देती है, पहले भी होती रही। तालिबान थे, ये MKM के लोग थे, ये मुसल्ला थे, ये जो हैं तहरीक लब्बैक वाले, ये मुसल्ला भी नहीं, लेकिन इन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला किया, 40 मोबाइलें जलाई, सब जलाई। तो ताज साहब, हुकूमत के जो के पास आप समझते हैं कि इस मामले को मिस हैंडल किया गया, हुकूमत की जानिब से सही इस मामले को हल करने की कोशिश नहीं की गई? ताज साहब, मास्क पहने, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते कि जी हम हुकूमत की बात नहीं मानेंगे, रियासत की बात हम नहीं मानेंगे। तो ये एक गरीब तबके में और रियासत के अंदर एक मुस्तकिल एक झगड़ा चल रहा है, और जरा सी बात पे, जरा सी कोई भी चिंगारी होती है उसमें एकदम, और अब रियासत उसे दबा भी नहीं सकती। अब रियासत में इतनी ताकत नहीं रही कि वो दबाए, क्योंकि रियासत अंदर से खोखली हो चुकी है। तो अब आपको बिल्कुल ही एक नई इक्वेशन देनी पड़ेगी, एक नई, जिसमें कि गरीब तबके को कोई उम्मीदें हो। अब आप कहते हैं मदरसे ये सिखाते हैं, ये मदरसे ये नहीं सिखाते। मदरसे क्या कर रहे हैं कि गरीब के बच्चे को रोटी मिल जाती है, गरीब के बच्चे को लिखना पढ़ना आ जाता है, इस वजह से गरीब का बच्चा उधर जा रहा है। रियासत अगर ये रखे इंतजाम कि नहीं हर बच्चे को तालीम मिलेगी, तो फिर ये जो सिलसिला है ये बदला जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो इसलिए जो एक नाउमीदी है, और इसलिए जो रियासत के साथ एक तसादुम की कैफियत है, ये रोज बरोज बढ़ती जा रही है। और जब तक कि इस असल मसले को ठीक नहीं किया जाएगा, तो ये जो है कभी इस टॉपिक पे कभी उस टॉपिक पे। साहब, इस मसले का असल हल क्या होना चाहिए? क्या हुकूमत को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? हुकूमत की क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए? ये हुकूमत तो नहीं करेगी, ये तो राइट विंग है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव हैं उनको अपनी एक चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखना चाहिए कि भाई ये हमारी डिमांड है, इस तरीके से रोजगार मिलेगा लोगों को, इस तरीके से लोगों की तालीम होगी, इस तरीके से इलाज होगा, ये तमाम चीजें इस तरीके से सर पे छत होगी, रोटी कपड़ा मकान ये मामलात हैं, और इसका इंतजाम जो है वो होना चाहिए। रियासत जितनी जल्दी ये बात समझ ले कि भाई असल मसला ये है, उतनी जल्दी इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए ज्वाइन किया। नाज़रीन, सेनेटर पीपल्स पार्टी ताज हैदर असां सां गॾु, उन जो चवण त हुकूमत खे असल मसइले खे ॾिसणो पवंदो। असल मसइलो छा आहे? असल मसइलो इहो आहे त अवाम खे कहिड़ियुनि शयुनि जी ज़रूरत आहे, अवाम जूं घुर्जूं कहिड़ियूं आहिनि, अवाम खे मुआशी मसइला कहिड़ा आहिनि, उन्हनि खे जॾहिं हल कंदासीं त आहिस्ता आहिस्ता इहे शयूं पंहिंजो पाण ख़तमु थींदियूं वेंदियूं। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।